इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्लास 11th के एजुकेशन पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये पेपर जेड सीरीज़ का है। एजुकेशन पेपर 100 मार्क्स का आता है और इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन था और इस एक क्वेश्चन में 20 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे और हर ऑब्जेक्टिव एक एक मार्क का था। पार्ट फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एजुकेशन इज एन आर्ट, एजुकेशन इज अ साइंस, it is neither art nor science. To some extent it is art and to some extent it is science. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी, to some extent it is art and to some extent it is science. Part second, what is the origin of word education? E and catum, edu and catum, word education, none of these. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए, E and catum. Part third, education without aim is systematic, यूजफुल, शॉर्ट लिव्ड, यूजलेस. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी, यूजलेस और मीनिंगलेस. पार्ट फोर्थ, द आइसोलेटेड इंडिविजुअल इज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन सेज रॉस, टैगोर, गांधी जी, रेमोंड. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी, रेमोंड. पार्ट फिफ्थ, द टर्म स्कूल इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड और फ्रेंच वर्ड. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन बी, ग्रीक वर्ड. पार्ट सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्कूल फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन? फ्रेंड्स, सोसाइटी, फैमिली, स्कूल. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन सी, फैमिली. बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है. पार्ट सेवेंथ, प्री प्राइमरी एजुकेशन कैन नॉट बी मेड फ्री ड्यू टू ह्यूज फाइनेंशियल implications, political implications, religious implications और social implications. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए, फाइनेंशियल implications. पार्ट एट्थ, प्री स्कूल पीरियड इज हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री, प्लास्टिक, सेटिस्फैक्ट्री और बेसलेस. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन बी, प्लास्टिक. प्री स्कूल पीरियड इज हाईली प्लास्टिक. पार्ट नाइन्थ, एजुकेशन रेजेस द कॉम्पिटेंस ऑफ एन एवरेज वर्कर एंड हेल्प्स टू फाइट पॉवर्टी, करप्शन, इग्नोरेंस और नन ऑफ दीज. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए, पॉवर्टी. पार्ट टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया? फ्री, यूनिवर्सल, कंपलसरी, ऑल ऑफ दीज. प्राइमरी एजुकेशन फ्री भी है, यूनिवर्सल भी है और कंपलसरी भी है. सो इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. पार्ट 11, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? फ्रॉइड, वॉस्टन, हॉल, वांट. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी, वांट. विलहेल्म वांट. पार्ट 12, द वर्ड साइकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रूडोल्फ गोकल इन 1590, 1690, 1790 और 1890. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए, 1590. पार्ट 13, इंस्टिंक्ट्स शुड नेवर बी मॉडिफाइड, चैनलाइज्ड, सप्रेस्ड और सब्लिमेटेड. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन सी, सप्रेस्ड. इंस्टिंक्ट्स शुड नेवर बी सप्रेस्ड. पार्ट 14, इमोशनल एक्सपीरियंसेस आर. इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्या होती हैं? सब्जेक्टिव होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं, इम्पर्सनल या नन ऑफ दीज. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए, सब्जेक्टिव. इमोशनल एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होती हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं. पार्ट 15, value is defined as positive term which signifies virtue and qualities, qualification, religion or liabilities. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए, qualities, virtue and qualities. Part 16, inculcation of basic human value was trusted by National Policy of Education in 1980, 1986, 1990 और none of these. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन बी, 1986. Part 17, important social values are tolerance, cooperation, live and let live or all of these. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी, all of these. Part 18, various democratic qualities are equality, fraternity, justice or all of these. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी, all of these. Part 19, the median is a score, a midpoint, point of class interval और upper limit of class interval. इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन बी, अ मिड पॉइंट. लास्ट पार्ट, द फार्मूला ऑफ मीडियन for ungrouped data when n is even is
2 divided by n, n plus 1 divided by 2, n plus 1 और n minus 1 divided by 2। इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन बी n plus 1 divided by 2। नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी में 5 मार्क्स की 2 पैसेजेस पूछी गई थी। पैसेज फर्स्ट, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नहीं है, यहाँ पर इन है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इन जनरल मीन्स एजुकेटिंग मैसेज थ्रू मीडिया, clubs and NGOs to help in creating awareness. The environmentalists are the people who feel for the improvement and protection of the environment based upon philosophy of conservation. This is required fulfilling needs of the society with positive attitude for future also. Basic principles involved are recycling of wastes, tapping of alternate source and resources, and reduction of losses at various levels. Environment is aggregate of all the external conditions influencing the life and development of man and all other living organisms. Now questions. Part A. What is the general meaning of environmental education? इसका आंसर यहाँ पर है स्टार्टिंग में। Environmental education in general means educating masses through media, clubs and NGOs to help in creating awareness. ये पार्ट A में लिखना था। Now part B. Part B. What means are used to provide environmental education? इसके आंसर में लिखना था media, clubs and NGOs. Media, clubs and NGOs. Part C. Who are the environmentalists? इसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ से the environmentalists are the people who feel for the improvement and protection of the environment based upon philosophy of conservation. ये part C में लिखना था। Now part D. Part D. Define the term environment. इसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ से environment is aggregate of all the external conditions influencing the life and development of man and all other living organisms. ये part D में लिखना था। Now question number 3, passage second. Passage second. The main cause of air pollution is smoke, which is produced by the burning of coal and other fuels and mixes with air to pollute it with carbon dioxide, carbon monoxide and soot. Smoke gets into air from kitchens, factories, automobiles, training and cigarette smoking. Radioactive dust and ionizing radiations are produced during the nuclear and atom bomb explosions. Pollen grains from flowers, fungal spores and suspended fine dust particles are responsible for causing various allergic reactions. Now questions. Part A. What do you think is the main cause of pollution in air? इसके आंसर में लिखना था smoke. Smoke is the main cause of pollution in air. Part B. Name the various sources of smoke that pollute air. इसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ से smoke gets into air from kitchens, factories, automobiles, training and cigarette smoking. ये part B में लिखना था। Now part C. Part C. What kind of gases render air unfit for inhaling? इसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट। सूट कार्बन का पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर फॉर्म। ये पार्ट सी में लिखना था। नाउ पार्ट डी। पार्ट डी। नेम द डिफरेंट अनवांटेड थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस। इसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ से रेडियो एक्टिव डस्ट एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस, ये लिखना ज़रूरी नहीं है एटम बॉम्ब्स तक। Radioactive dust and ionizing radiations, pollen grains from flowers, fungal spores and suspended fine dust particles are responsible for causing various allergic reactions. ये part D में लिखना था। Now section C. Section C में 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 12। इनका आंसर 25 वर्ड्स में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4. Write down the names of any 3 modern Indian educationalists. इंडिया के 3 मॉडर्न एजुकेशनलिस्ट्स के नाम लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 5. What do you understand by the meaning of aim? Question number 6. Give 2 merits of spiritual aim of education. Question number 7. Write down some limitations of radio as an agency of education. Question number 8. What do you mean by the term press? Question number 9. Make mention of 2 aims of pre-primary education. Question number 10. Write down full form of ECCE and UEE. ECCE का full form होता है Early Childhood Care and Education.
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और यूईई का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। Question number 11. Write down 2 important features of education psychology. Question number 12. Explain the term cumulative frequency curve. Now section D. Section D में 4 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनका आंसर 100 वर्ड्स में लिखना था। Question number 13. Discuss the necessity and importance of aims in education. Question number 14. Describe the informal agencies of education. Question number 15. Discuss the objectives of pre-primary education. Question number 16. Write down the causes of wastage and stagnation. Question number 17. Describe briefly the term universalization of retention in the field of elementary education. Question number 18. Write down the various methods used for training of emotions. Question number 19. Discuss the importance of emotions in life. Now section E. सेक्शन ई में 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 to 23 और इनका आंसर 150 वर्ड्स में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 20. डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। और पार्ट एक्सप्लेन नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। राइट डाउन द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ऑब्जर्वेशन मेथड। और पार्ट explain the importance of educational psychology. Question number 22. Discuss briefly the sharp influence of modernity on human values. Or part discuss erosion of human values with regard to political, social and economic values. Question number 23. Question number 23 में इस ग्रुप डेटा का लॉन्ग मेथड से मीन निकालना था। इस साइड में क्लास इंटरवल दिया गया था, इस साइड में फ्रीक्वेंसी। और पार्ट में मीडियन निकालना था, इसमें भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया था।